Good morning students. Now let us continue chapter number 6. Last time discussed about the Cuban crisis. Now Cuban crisis is the most important question. Then we see the results. Now you know that America and Soviet Union, two superpower, and the Britain agreed on maintaining the control over nuclear production and the experiment and proliferation. राइट कि ये तीन देशों ने नक्की कर दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स उसका प्रोडक्शन उसका कंट्रोल कर लेंगे, राइट, एक्सपेरिमेंट्स भी कम करेंगे. दिस एग्रीमेंट इज नोन एज पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. मतलब न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं करना है, उसके ऊपर बैन लगा गया है. ऑफ कोर्स रिफ्यूज्ड टू साइन दिस ट्रीटी. And also China also conducted a nuclear test in 1964 and refused to sign the treaty. अभी ये इकरारनामे पे सही नहीं की चाइना ने भी, उसने 64 में एक अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया. And this treaty to sign this treaty imposed a ban on conducting a nuclear test in open atmosphere. Because you know that atmosphere get polluted because of this testing. So there was a ban on nuclear testing in open atmosphere, and of course except communist China, the other four were already permanent members of United Nations Security Council, possessing veto power. Right, so other four were the permanent members, while the China was not the permanent member. Apart from the nuclear weapons and missiles, the superpowers have also developed chemical and biological weapons. Now ये सब न्यूक्लियर वेपन तो बनाए उन्होंने, मिसाइल बनाए, न्यूक्लियर वेपन बनाए सुपर पावर्स ने, उसके सिवाय केमिकल एंड बायोलॉजिकल weapon. Now you know what is chemical and biological weapon. Now you know that corona is spread. That is one of the pandemic. Pandemic means spread all over the world. So that is actually biological weapon. These type of microorganisms, they spread and infection that pass from person to person. So that is called biological weapon. So the disease spreading virus or bacteria is spread purposely. So this is one of the example. Now chemical weapons means some of the chemical if they spread, then they kill so many people, thousands, lakhs of the people at a time, poisonous gases or the spray like that. So they are called chemical weapons. These weapons of mass destruction can kill millions of the people without damaging any materialistic wealth. उसमें क्या होगा, सिर्फ लोगों की और जानवरों की, पक्षियों की जान जाएगी, कोई हमारा वेल्थ का, मिल्कत का नुकसान नहीं होगा. बॉम्ब में क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन में वहाँ हमारी मिल्कत का भी नुकसान होता है, राइट. इसमें सिर्फ लोगों की जान जाएगी, मिल्कत नहीं जाएगी. People would die miserably while suffering from various diseases because of these lethal weapons. ऐसे मौतमार वेपन अगर यूज़ किए गए तो हज़ारों करोड़ों लोगों की एक टाइम पे जान जा सकती है. During these decades, many important and far-fetching changes took place in the international politics. Owing to many reasons, the Cold War among superpowers also ended, and so the nuclear ban treaty helped in this concern. India has always welcomed this treaty, but it is always a supporter of disarmament. India ने कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया न्यूक्लियर वेपन रखने को, राइट. The world will be always in danger until the disarmament of lethal weapons is not done. तो अगर ऐसा किया गया तो पूरी दुनिया में ये खतरा तो मंडरा ही रहा है कि कभी भी कोई भी बम फेंक दे एक देश दूसरे देश के ऊपर. तो यू नो द रिजल्ट ऑफ दिस हिरोशिमा एंड नागासाकी, द टू सिटीज ऑफ जापान. सो विद इन द फ्यू सेकेंड्स that country can be destroyed, right. Now rise
of independent nations in India. We start. India achieved independence in 1947 after long freedom struggle. You know, about 150 years the British and other people, they came to India, ruled over India. Owing to Britain's policy of divide and rule and certain other reasons, the country was divided into two nations, namely India and Pakistan. अभी ये सब चाल किसकी थी? अंग्रेजों की, कि डिवाइड एंड रूल, भागला पाड़ो ने राज करो, राइट? सो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन करवा दिया. And in the same way, with continuous struggle against Britishers, countries like Sri Lanka, Myanmar got independence in 1948. In the case of Indonesia, United Nations play an important role. In 1949, Asian countries like Laos, Cambodia and Vietnam too got independence. ये सभी देश अंग्रेजों के गुलाम थे, वो भी अलग हो गए, आज़ाद हो गए. Right? Now last topic of today, that is rise of independent nations in Africa. Now you know, Second World War proved to be good omen for the enslaved nation. Enslaved मतलब जो गुलाम थे देश, जैसे अफ्रीकन लोग जो होते हैं निग्रोस, वो गोरों के गुलाम थे, राइट? सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, countries like Abyssinia, means Ethiopia, South Africa and Egypt were independent. The Second World War and the freedom struggle in Asian countries inspired the other African countries too. It resulted in during the tenure of 16 years from 1951 to 1966, 40 small and large countries become free. अभी अफ्रीका इज वन ऑफ द कॉन्टिनेंट, उसके 40 देश आज़ाद हो गए. इंपीरियलिस्ट कंट्रीज ट्राइड टू हैव सुप्रीमेसी. इंपीरियलिस्ट मतलब जहाँ पे तानाशाही चलती थी, उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी बताई. एंड ओवर दीज कंट्रीज, बट दीज कंट्रीज आइदर ज्वाइन द सुपर पावर्स, या तो सुपर पावर के साथ ज्वाइन हो गए, और द मिलिट्री resources and got their freedom. Okay, then tomorrow we shall proceed.